Welcome back to On Goal, people. Madrid has defeated Barcelona in the biggest match in the world football history, the El Clasico. Madrid beat Barcelona 2 goals to 1 in what you can call a true Carlo Ancelotti masterclass. And this shows you कि कितना important है एक चैंपियनशिप एक्सपीरियंस, एक चैंपियनशिप पेडिग्री का मैनेजर होना एक बड़े क्लब के लिए. कार्लो एंचेलोटी completely outclassed Ronald Koeman on this one. Stats की बात करें तो initially you would see that there is not much to pick apart in both of the teams. बहुत similar stats है, possession भी almost 50-50 था, but it is not the true reflection of the game. Initially I would say 20 minutes the game बहुत boring था. बहुत ही दोनों डिफेंसिव खेल रही थी टीमें, दोनों एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे and they didn't want to concede in those initial 20 minutes. But after that, on this moment, the game actually turned its head. विनीशियस और जॉर्डी अल्बा के बीच में कहासुनी हुई और जो एक फ्लेवर है राइवलरी का, एक फ्लेवर है जो एल क्लासिको का, वो हमें देखने को मिला. और इस मोमेंट के बाद से यू सॉ दैट मैड्रिड गॉट वे टू एग्रेसिव अपनी प्रेसिंग में, अपने फिजिकलिटी में. दे वर मोर फेरोशियस, दे वर मोर टेनेशियस, एंड यू सॉ द गोल कमिंग from this. David Alaba scored a brilliant goal. What a finish that was. That goal happened from a Barcelona corner. It was a counter attack. It was a classical counter attack by Real Madrid. Real Madrid से dangerous कोई भी टीम नहीं है counter attack पे. And डेविड अलाबा के लिए बात कहूंगा कि डेविड अलाबा is one of the great defenders of his time, and he had a lot of options to go after he decided to leave Bayern Munich, but it was his dream to come to Real Madrid. और आज उसका ड्रीम उसने एल क्लासिको में स्कोर करके he must be feeling on top of his world right now. बट गोल की बात करें तो इट केम फ्रॉम अ बार्सिलोना कॉर्नर. लाइक आई सेड, काउंटर पे हमेशा देखा विनीशियस वाज ऑलवेज अवेलेबल फॉर काउंटर अटैक, और विनीशियस ने वहां पे मिंगुएजा को बीट किया. ही पास द बॉल टू रोड्रिगो, एंड डेविड अलाबा कंटिन्यूड हिज रन फ्रॉम द डिफेंस एंड फिनिश्ड अ फैंटास्टिक गोल फॉर मैड्रिड. Vinicius Junior was particularly exceptional today in the match. He was a threat, entire match में threat था. And the way this player has grown in terms of his maturity, in terms of his team play, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी रीड ऑफ द गेम है. वो ड्रिबल पास करता था बहुत पहले, हर टाइम पे ड्रिबल करता था. अब वो चूज करता है अपने मूवमेंट्स की कब ड्रिबल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. एंड ही इज ऑलवेज अ थ्रेट विद द वे ही, विद हिज पेस, with the way he dribbles past opposition players. And for me, he was the man of the match in this game too. He was always a constant threat, and what a player this guy is developing into right now. So uh, another thing आज देखने को जो मिला कि मैड्रिड की जो मिडफील्ड है, जो the famous midfield trio of Casemiro, Kroos and Madrid, they completely outclassed the midfield of Barcelona. Frenkie de Jong, Busquets और गावी के पास आंसर नहीं थे. They were more physical. Madrid midfield was more physical. They were more tenacious and they were more ferocious in their battles. उनको टाइम नहीं दिया बॉल पे. बुस्केट्स और डियोंग को गावी पूरे मैच में स्ट्रगल किया हमने देखा. That's why he got substituted also, I think, later on. But you have to credit this midfield of Madrid, जो कि चैंपियन मिडफील्ड है. 3 चैंपियंस लगातार जीते हैं इस मिडफील्ड ने, and they showed the pedigree of that caliber that they have in this match too. And especially Modric was completely exceptional in the game. The way he was conducting the whole opera, which he does like the wizard that he is, I think he was a complete a player in that midfield today. A very exceptional performance from him, especially. And Lucas Vasquez, another player, I must say, that performed exceptionally today. जॉर्डी अल्बा का एक थ्रेट होता है जो बार्सिलोना के लिए, वी ऑल नो कि बार्सिलोना का सबसे बड़ा थ्रेट है लेफ्ट हैंड साइड से जॉर्डी अल्बा के जो ओवरलैपिंग रन होते हैं. लूकस वास्केज का आज पूरा काम ही यही था. कार्लो एंचेलोटी ने उसको यही काम दिया कि यू हैव टू ट्रैक जॉर्डी अल्बा इन दैट लेफ्ट हैंड साइड, ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, एंड ही डिड इट ऑल मैच लॉन्ग. उसको क्रॉसेस करने नहीं दिए, काफी उसके क्रॉसेस उसको रोका उसने, काफी उसके runs उसने block करे. And Lucas Vazquez was exceptional in the match, and he capped it off by scoring a wonderful goal which came again from a counter attack. तो पूरा डिफेंस से पूरा पिच का लेंथ रन करके ये बंदा गया और उसने गोल स्कोर किया, एंड कंप्लीटली डिजर्व दैट गोल, आई मस्ट से. बट अगर बार्सिलोना के लिए बात करें तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज गेम टैक्टिक्स वाइज कूमन के लिए, मैं कहूंगा, क्योंकि अंसु फाती वी सॉ हिम प्ले मोर सेंट्रली डिपाई के साथ, एंड इट डिड नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी बिकॉज अंसु फाती का स्ट्रेंथ है वो वाइड से वाइड खेलता है.
अंदर से बाहर जब वो कट करके आता है, तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ in the game, which he was not able to use because he was more tucked in with Depay. So Jordi Alba, that's why he also felt isolated on that left hand side. उसको support नहीं मिल पा रहा था. And entire match में हमने देखा कि ये चीज के कारण वो struggle किया. Second half में ये change आया and we saw a little bit of a more dynamism in their attack. But it was not very a good match tactically. But Barcelona, I must say, had a lot of chances too. We saw Zinho Dest had the best chance of the game, I think, when he was a sitter, basically. And it was a very disappointing miss. Koeman even mentioned it in his press conference later on. And it was a completely easy chance to be, and he should score that. Yes, definitely. But he should not call your players out like this in the press conferences. It shows a weak mindset from you, and it shows a responsibility of blaming other people where you should be the one taking responsibility for defeats. PK का भी एक चांस मिस हुआ, एक हेडर मिस हुआ. कटिन्यो को सेकंड हाफ में वो लेके आया. कुटिन्यो के आने से यस एक डायनामिक चेंज हुआ मैच का, एक अटैक थोड़ा सा मतलब उसको वैरायटी मिली एंड ही वाज गुड इन द सेकंड हाफ, आई मस्ट से दैट. और लेकिन उसके सबके बावजूद भी देयर वाज नॉट इनफ वेनम इन देयर अटैक. Yes, Aguero pulled off a goal, a huge moment for Aguero, his first goal for Barcelona coming in El Clasico. But it came in the 96th minute when the match was almost over. So it proved just to be a consolation and nothing else. Koeman का कहना है कि we did enough in the match to get a different result. I will not completely agree with him, but I will not also completely disagree with him. Yes, they created some good chances, and if they would have scored those chances, maybe they would have gotten a better result. But to say that is a little bit of blaming other people, because tactically you have to accept the fact that you were not capable of dealing with what Carlo Ancelotti did to you. Carlo Ancelotti completely nullified the threats that you have, और उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं था. So ये कहना again is more like blaming other people, where it should be your responsibility as a manager to accept defeat and to take responsibility for it. Overall, it was a poor game for Barcelona. It was a good game actually, but in a way they struggled a lot, and this is the fourth consecutive defeat for Barcelona in El Clasicos. So it is a very humiliating result, because ये मैच बहुत बड़ा मैच है बार्सिलोना फैंस के लिए. हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये जीतना, और इस तरह से तुम 4 बार लगातार हार रहे हो. So obviously questions must be asked now. And Koeman, another in another way, he's showing that he's not capable of doing the job. Well, anyways, that's my 2 cents on the today's El Clasico. What do you guys think? Please comment down and like and subscribe to our channel.